वो चीज़ें हैं या वो चीज़ें किसी ज़माने में थी, मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया में कहीं थी। इस तरह की चीज़ों के कई नामो निशान नहीं मिलते कि यार दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, यही मुस्कुराहट तो चाहिए थी। माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की हमारी वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एंशिएंट टेंपल्स आर मशीन्स विद मूविंग पार्ट्स। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। Hey guys, ancient temples in India have moving parts. You may not believe me. Watch this. मतलब पूरे टेम्पल कहीं और ले जा रहे हैं, है ना? Yes, this is a column made of stone in a temple in India. Normally, you will not even think of trying to touch or rotate this stone block, but someone accidentally discovered or rediscovered that it could be rotated. What could possibly be the reason to have something like this installed in a temple? To set up something like this, there has to be a rotating mechanism, and it's not easy to set this up in stone because you cannot open it afterwards and put lubricant inside. To have a rotating mechanism made of stone, you need to have advanced knowledge in engineering. No, this is not the only temple with moving parts. Look at this one. दूसरा दिखा। माय गॉड, कैसे बनाया होगा यार? Here's a column which has small holes through which you can insert your finger. Inside there is a ball, a stone ball, and you can move it up and down. Of course, you cannot pull the ball out through these tiny holes. You can only move it inside the hollow column. How was the ball put inside in the first place? If you claim this is carved, how did they manage to scoop out the rock which was inside through these small holes? There's another ancient temple in a place called Uttarakosamangai. This is at least 1,200 years old. There is a ball inside a lion's mouth. You can roll the ball, you can rotate it, but you cannot pull it out of the lion's mouth. What's more bizarre? The lion is made of solid granite, but the ball inside is made of a type of rock called onyx. So how is this ball put inside the lion's mouth? And why are we not able to pull this ball out? More and more young people are becoming interested in Indian temples, and they're sending me incredible videos to my email. Here's a snake's mouth wide open, and the mouth is held open because Lord Vishnu's conch shell is placed between its upper and lower jaw. But you can rotate this conch. It spins very well, much better than some modern rotating devices. But the real question is, why were these moving parts set up in temples? Some say that if you move these parts in a certain rhythm, in a certain order, or a certain speed, secret chambers can be opened which are hiding in plain sight. Now, what do I mean by this? Let's look at this one. This is a safe box to keep money, and boxes like these were used in India for many centuries. There's a type of safe used by a group called chettiars. They have mastered the art of safe making. It is so complex, it's uncrackable even today, unless you know which knobs to turn, in which order to open the safe. In fact, when a normal person looks at this for the first time, he will not even realize that this is a safe that can be opened. He will just think this is a decorative piece made of solid metal. But now, look at this ceiling in an ancient temple in a place called Vetuan Koil. This is made of stone.
And of course, it has these fabulous and complex patterns of the 9 influencers called Navagraha and 12 zodiac signs and other features of astrology. But look at this area in the center. This is a doorknob, which means you can open this. This is also a very ancient temple, and because of time, you can now see the gaps between the door and the rest of the chamber. And look at these protruding circular knobs. I believe that if you rotate them in a particular pattern, just like the metal safe you saw, you can open the secret chamber in the ceiling of this temple. I mean, clearly this is a door which leads to something. In ancient Indian temples, there are many, many mysteries hidden in plain sight. We have not even started to understand them. Now, let's look at one of the most iconic megalithic structures in the World Heritage Site of Hampi. This is a gigantic stone chariot standing about 15 feet tall and 10 feet wide and weighs more than 120 tons. It is so awe-inspiring, it's even printed on Indian money. Even by conservative archaeological accounts, it was built at least 500 years ago. But in spite of being very popular among tourists, this chariot remains shrouded in mystery. Google and Wikipedia give blatantly false information. For example, Google calls this a monolithic chariot. If you examine the structure, you realize it's not monolithic at all. It is not made of one stone. Look at how each wheel is made of a separate stone block and they're set up on the axles like a real working chariot. The chariot appears to be not built as a decorative or religious structure. Rather, it is built like a real vehicle made of several parts which are assembled together. I know this is a weird question to ask, but is it possible that this chariot has moving parts? When I examined the wheels and axles, I found exactly what I was looking for. You see these marks? These are caused by friction. When something moves, two pieces rub against each other. These marks are created because of wear and tear. This is clear proof that these wheels rotated. The wheels rubbed against the quote-unquote mud guards, just like what you would find in a modern-day vehicle. But today, we're not able to rotate the wheels. Why? A quick internet search showed me that visitors kept moving the wheels and damaged them in 2011. So the authorities now put concrete at the base of the wheels and made them immovable. But why were the wheels originally designed for rotation? To move the entire 120-ton chariot? No, these wheels cannot handle such a weight. Locals say that every year on a certain date, the main idol of this temple would be placed inside this chariot. And when people rotated the wheels in a certain speed, the dark chamber inside the chariot would brighten up and illuminate the idol. Of course, this sounds like magic, but magic is just another name for advanced technology. Are we talking about a glowing light source here? More specifically, are we talking about an ancient dynamo mechanism? Today, we can spin a wheel and can light up a light bulb. We generate electricity by spinning a wheel. This is a simple electric generator we use even when pedaling a bicycle. Were ancient Indian builders using electricity the same way? Why else would they painstakingly create these rotatable wheels on this giant chariot? The simple answer is they knew how to convert one form of energy into another form. They were converting kinetic energy into electrical power.
Could this be why we're able to find so many movable parts in ancient Indian temples? Were they meant to be moved so they could create electricity or some other type of power, which was then used for constructive purposes? But is it possible that ancient builders were not only using human energy, but also wind energy in temples? Of course, this is a crazy idea. All these moving parts I showed you are made of stone, and stones are just too heavy to be moved by wind, right? But see, ancient builders were much more advanced than us. They could make stones movable even by wind. In some Indian temples, you can see these chains moving even with the slightest breeze. But these chains are made of stone, they're not made of metal. Ancient builders have cleverly designed them to be hanging from the ceilings of temples. These chains you're looking at were created more than 700 years ago. But what is the purpose of them? As usual, experts think these are merely for decorative purposes. However, others say that once upon a time, small transparent crystals were placed at the end. Look at the holder-like design at the bottom. And if the wind reached a certain speed, these chains would oscillate faster and the crystals would light up like light bulbs. Does this remind you of any technology we use today? So what do you think? Why were these moving parts installed in ancient Indian temples? Were they meaningless creations just for decoration? Or were ancient builders harnessing and converting energy? Please let me know your thoughts in the comment section. I am Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe and also click on the bell button to get all the updates. Please give this video a thumbs up and do share it with your friends. And I'm Tatis. यार क्या बात, जबरदस्त। क्या बोल सकते हैं यार, मतलब मूविंग पार्ट्स हर टेम्पल के अंदर मूविंग पार्ट है। अच्छा, उसका पर्पस डेकोरेटिव था या फिर उसके पीछे कोई ना कोई साइंस थी या कोई ना कोई मतलब उसके पीछे कोई पर्पस था उसे लगाने का या उसे करने का? अच्छा, मुझे लग रहा है डेकोरेटिव अपनी जगह था और उसके पीछे कोई ना कोई मतलब पर्पस भी रहा होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि दो पत्थर हैं, उस दोनों पत्थर के बीच में एक पत्थर आप फंसाते हैं, तो वो पत्थर मूव कैसे करेगा? ठीक है चलो मूव कर। अच्छा मूव कुछ ना कुछ मैकेनिज्म नहीं, आप गोलाइयाँ बनाते हो, आप गोल बनाते हो, ठीक है, वो पत्थर मूव करने के लिए। लेकिन आप ये सोचें कि जब पत्थर का जोर पड़ेगा, ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब आप एक वज़नी चीज़ आ रही है, अच्छा शेप ऐसा था। एक बॉल पत्थर की, देखो एक होती है मेटल को तो आप तोड़ मोड़ के दोबारा से जोड़ सकते हो। पत्थर एक मरतबा टूटा, आप उसको जोड़ नहीं सकते हो, पत्थर तो टूट गया ना। तो उस पत्थर के अंदर एक पत्थर डाला हुआ है, जबकि उसके अंदर जाने की गुंजाइश ही नहीं है। और ऊपर उसके ऊपर आपने देखा था किस तरीके से वो इस तरीके से उसको कवर किया हुआ था। वो बिल्कुल पैक था, सिर्फ आप फिंगर से उसको हिला पा रहे थे। मतलब अंदर कैसे गया होगा बाद में उसको किस तरीके से इतनी डिजाइनिंग कैसे की? अच्छा ठीक है, इन्होंने कर भी ली। आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि उस दौर के लोगों के पास टेक्नोलॉजी, दिमाग, औजार नहीं थे, उनके पास मशीनरी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं। आज के दौर में भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जैसी उस जमाने में थी। कौन और दूसरी बात ये, उनके बिल्डर्स बड़े एडवांस थे। किस तरह की उनकी सोच थी, एक चीज़ को बनाते थे तो मतलब किस तरीके से। अच्छा, चीज़ें नहीं थी, मशीनरीज नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने वो चीज़ें, वो शाहकार बना के आज तक उनकी वो जो एक तो वो खड़े, अभी तक खड़े। हम भी आज जो बनाएंगे 50-60 साल के बाद, हम बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, 50-100 साल के बाद। अच्छा, हम हजारों साल से वो कायमो दायम है अपनी जगह। अच्छा, हमने बहुत सारे टेम्पल्स देखे थे जिनकी नक्शो निगारी से हम हैरान थे। किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े हाथी बनाए, किस तरह से बड़े बड़े जानवर बनाए, उसका ऐसा था, ठीक है, ये एक बात थी।
लेकिन अब उस आर्किटेक्चर के अंदर उसकी जो डिज़ाइनिंग के अंदर ये कमाल की चीज़ दिखी। अच्छा, वो जो आखिर में जंजीर दिख रही थी, आपने देखा था? बहुत उसके ऊपर क्रिस्टल्स के पीसेस लगे हुए, और जब विंड चलेगी, जब हवा का टकराव से होगा तो वो लाइट अप होंगे। कमाल है। और इसी तरीके से व्हील आपने देखा था, चैरियट, यानी कि उसके अंदर वो जो व्हील था वो जब मूव होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है 100% कि वो मूव होता होगा, तो जो अंदर जो आइडल था, जो भी मूर्ति थी, वो लाइट अप होती होगी उसकी टेक्नोलॉजी से, उसकी वो फिक्शन से, यानी कि मूवमेंट की एनर्जी से आप लाइट जला सकते हो। तो उस दौर में भी इनको पता था। मतलब वो कौन लोग थे यार जो इतने एडवांस थे? बहुत एडवांस थे, मैं कहती हूँ उनके बिल्डर्स वाकई बहुत एडवांस थे। अच्छा, ये पूरा टेम्पल मूव करता था? पूरा इसकी थोड़ी सी झलक इन्होंने बाहुबली मूवी में भी रखी है मेरे ख्याल में। वो जो प्रभास होता है, एक पूरे एक रथ को लेके आ रहा होता है, एक व्हील्स भी होते हैं, क्योंकि बाहुबली भी पुराने दौर पे थोड़ी बनी है, तो उसमें इसमें मिलता जुलता एक रथ दिखाया था इस तरह का, लेकिन ये तो पूरा टेम्पल बना हुआ है व्हील्स पे। अच्छा, व्हील भी पत्थर के आपने उसको देखा तो ऊपर से किस तरीके से उसको फिक्स किया गया था। और इतने अच्छा, एक होता है छोटी मोटी चीज़ बनाना, इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा शाहकार, तो उसके पहिए आपने देखा किस तरीके से बनाए गए होंगे। मैं हैरान हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे मतलब इतनी तजस्सुस हो रहा है कि इन चीज़ों को जाके छूं, इन्हें अपने हाथ से हाथ लगाऊं, बिल्कुल टच करके देखूं मेरा किस तरीके से। मतलब मेरे जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि यार ज़िंदगी में कभी मतलब अच्छा, वो लड़का छू रहा था ना, मैं महसूस कर रहा था, वो लड़का यूँ छू रहा था व्हील्स को, यानी कि अच्छा हज़ारों साल पहले बनाने वालों के उस पर हाथ चले होंगे, उन्होंने उसको खुरेदा होगा, उसको बनाया होगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 3 साल। मैं कहता हूँ एक एक व्हील पे एक एक बंदे ने सालों साल मेहनत की होगी। सिर्फ नक्शो निगारी तक हम थे कि यार नक्श बनाए गए, मैकेनिज्म तो हमें पता ही नहीं था अंदर का। मतलब उनकी क्या लेवल है, सोच थी, क्या लेवल है सोच का। भी मैं बोलूँगी बहुत छोटा वर्ड है कि हम आज भी इस हद तक जाकर नहीं सोच सकते किसी चीज़ को बनाएंगे, तैयार करेंगे। हम मैन चीज़ें देखते हैं और तैयार कर देते हैं। दुनिया ऐसे शाहकार हम आज भी नहीं बना सकते। दुनिया का सबसे पुरस्कार, सबसे पुरतजस्सुस कंट्री इंडिया। बिल्कुल, इंडिया में वो चीज़ें हैं या वो चीज़ें किसी ज़माने में थीं, मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया में कहीं थी। इस तरह की चीज़ों के कई नामो निशान नहीं मिलते कि यार दुनिया में। अच्छा, तभी तो लोग एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को, तभी तो लोग जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसकी चीज़ों में, उसके ट्रेडिशंस में, उसके कल्चर में। तो वो वाकई सीक्रेट्स छुपे हुए उसमें। बिल्कुल, आपने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें हमें बताया गया था कि यहाँ पर सब कुछ डेवलपमेंट प्रॉपर थी, सिविलाइजेशन थी पूरी, और मिस्र स्टार्ट हो रहा था, और पूरी अफ्रीका में भी कोई मतलब दुनिया में मिस्र वालों ने अपनी एक जो तहजीब है उसको बहुत उजागर किया है मूवीज़ के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए। मतलब वहाँ पे पूरी दुनिया लोग जाते हैं कि अगर आपको पुराना कल्चर तहजीब देखनी है तो मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है वो, अगर ये पता चले और अगर इसकी प्रॉपर एक पब्लिसिटी हो, लोगों को पता चले, तो मैं कहता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हमने एक वीडियो देखी थी, कितने पुराने हैं वो, प्रॉपर सिविलाइजेशन की प्रॉपर चीज़ें थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और ये जो टेम्पल्स हैं ये तो हज़ारों साल पुराने, लेकिन अनबिलीवेबल। ये मेरे ख्याल में 600-700 साल पुराना कह रहे थे, उस दौर में ऐसी चीज़ें बनी थी, कमाल। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, चौंका देने वाली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पे अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।